हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। मैं अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बाकी हनमा। ये सीरीज़ आप लोग ज़रूर देखना। इसके अंदर एक बहुत कमाल का फाइटर होता है जो मतलब सबको धीरे धीरे सरपास करता है। अभी इसका नया सीज़न भी आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस वीडियो में मैं मतलब ज़्यादातर यही तीन चीज़ यूज़ करता हूँ। 0.7 mm की लेड पेंसिल, एक नॉर्मल इरेजर और एक मैकेनिकल इरेजर और एक स्केल। बाकी सब सामान को साइड कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसी चीज़ों को मैं मतलब ज़्यादातर वीडियो में इन्हीं सामान का यूज़ करता हूँ। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ों का यूज़ करना आपको दिखाऊँगा। और तो सबसे पहले ना मैं अपनी वीडियो में हमेशा मैं सबसे पहले गाइडलाइंस बनाना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि गाइडलाइंस से आप लोग जानते हो कि अगर आपको नहीं पता है गाइडलाइंस कैसे लेनी है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। तो अभी सबसे पहले ना मैं पेपर का मेज़रमेंट लेके उसके बाद उसके अंदर गाइडलाइंस बनाना चालू करूँगा। मैं ना नॉर्मल पेपर साइज़ पे नहीं बनाता, मैं अपने हिसाब से पेपर साइज़ डिसाइड करता हूँ। तो मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करा है मैंने। तो कुछ इस तरह से गाइडलाइंस आपको बनाने के बाद आपको अपने ड्राइंग को आप जहाँ से चाहो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से शुरू करनी है ड्राइंग। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो आप उस हिसाब से उसको एक प्रॉपर पैटर्न में बनाते हुए चले जाओगे। और आपको ना अपने ड्राइंग बनाना शुरू करना है, उसके बाद ना ऊपर से नीचे तक ना एक पैटर्न में जाना है, ताकि ना भूलो मत कि आपको क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। तो इसी तरह अपनी ड्राइंग को बनाना। और मेरी मान तो मैं सजेस्ट करूँगा इस सीरीज़ को ज़रूर देखना, ज़रूर 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 देखना। When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
ground. But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear when you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, gravity pulls you straight down. Clear when you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down.
when you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. When you want to get off the darkest ground, but gravity pulls you straight down. Clear sky. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर चाहिए। मैं ज़रूर उस कैरेक्टर को बनाऊंगा और इसको आप लोग देख के ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। और इस सीरीज़ को भी एक बार देखना, आप जैसी लगे आप लोग मेरे को कमेंट में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।